In this question, a cylindrical transparent vessel of height h, where h is much less than the radius of the vessel, is filled with an ideal gas of molar mass m at a temperature T and a pressure P0. The dependence of the refractive index n of the gas on its density rho obeys the law n is equal to 1 plus alpha times rho, where alpha is some constant. The vessel is rotated at an angular velocity omega about its axis as on the figure. A narrow parallel beam of light of radius r beam is incident along the axis. Suppose a narrow parallel beam, let's say this is the narrow parallel beam which is incident along the axis like this. So it has a radius very less, and this is a narrow beam like a pencil. Determine the radius r of this spot on the screen placed at right angles to the vessel axis at a distance L behind the vessel. Somewhere here there is a screen at a distance L from this vessel. Assuming that the change in the gas pressure at each point of the vessel due to rotation is small as compared with the pressure P0. So due to this rotation, the pressure will vary in the radial direction, but that variation is not that much, so we have to use this approximation in the calculation also. The effect of the end faces of the vessel on the path of the rays should be neglected. So we should not take any kind of refraction or bending from these kind of faces, from this face or this face. We have to take the effects of this ideal gas, and in this ideal gas the refractive index is varying with density, with variation of density. And why the density will vary in this gas? Because of this rotation the pressure will vary, and we know the relation between pressure and density for an ideal gas. This is P is equal to rho RT by m. So pressure at different points will be different, and according to that the density at different points will be different radially, and due to this radial variation of pressure the density will vary, and if density will vary from this expression of refractive index, the refractive index will vary with the density. So we will have a radial variation of refractive index. So in this situation, let us first find out how the refractive index varies with radial distance r. So let us first find how n varies with r, and for that we have to find the pressure as a function of the radial distance r. So let us first find out the pressure as a function of radial distance r. So let us take some element. I am just drawing the circular cross section of this cylindrical vessel. This cylindrical vessel is basically a very thin disc. We can also call it a very thin disc because its thickness is very less as compared to its radius. So it is very thin disc. We can also call it like the disc. Suppose this is the circular cross section of this disc or cylinder, and this point denotes the axis, and I am taking some element like this on this two radial lines. So let's say this is the element, and this element has radius, this radius is equal to r, and this width is equal to dr. And on this element, in this cross section, this is just like a plane area, but it is going through this cylinder, it is going into this cylinder, and it has the height also equal to h. Suppose the area of its face is equal to a. Let us draw it separately. So this is this kind of element. Let's say pressure at this face at r is equal to r. Assume pressure is equal to P, and at r is equal to r plus dr, assume pressure at P plus dP. So at this face the force due to pressure will be P into area A, and at this face P plus dP into A. अगर इसको थोड़ा विजुलाइज करें और थोड़ा एनालिसिस इसका करें
तो ये क्लियर हो जाएगा कि जो dp है वो पॉजिटिव होना चाहिए. दैट मीन्स कि with the radial distance r, pressure should increase. As we increase the r, pressure should increase because this element is going in a circular motion. If this element is going in a circular motion, then the net force due to pressure should be towards the axis, and this net force should be in this direction towards the axis. And here the net force is, here it is p into a, here it is p plus dp into a, so the net force will be dp into a. So this is the net force on this element, and this net force is equal to mass into its acceleration towards the axis. Suppose its mass is dm and this is acceleration is omega square into r. What is this dm? Dm is the density of this element, rho, area, and this width dr. So this is the volume A into dr, and this is the mass. This is omega square into r. So this is dp into this a, and this a and this a will be cancelled. So dp from here, the change in pressure in dr distance, dp is equal to, it is rho omega square r dr. We can make an approximation here that the pressure is not changing that much, and obviously density is attached with the pressure. P and density are related like this: P is equal to rho RT by m, or rho is equal to PM by RT. So these two are attached with each other. So I can put rho is equal to PM by RT also. So this rho is equal to this PM by RT, and P is the pressure at a distance r from the axis. So we can make an approximation. I can take this P equal to P naught and integrate on both the side. This integration will give me the change in pressure, and this integration will be from 0 to r. Or we can also take P in this denominator of this. So I am doing the calculation both ways, by taking approximation here itself, or we have to approximate further if we don't approximate here. So if I am not applying the approximation at this particular junction, then we have to write dp by p integration, and this will be m by rt, where m is the molar mass. So this is m by rt omega square, and this r dr will be in the integration. It is from 0 to r, and pressure is varying in the radial direction. So I can just say that at the axis, at the point of axis, pressure is still P naught, and pressure is not varying that much also. Here it is written that due to rotation pressure is not varying that much, and effect of rotation will be more at those points which are further away from the axis. जो points axis से दूर हैं वहाँ पे rotation का effect सबसे ज़्यादा मिलेगा यहाँ पर. तो at r is equal to 0, pressure is P naught, and r is equal to r, pressure, let's say this is P. So in the LHS, this is ln P by P naught, and this is m omega square r square by 2 RT. Further, P is equal to P naught exponential m omega square r square by 2 RT. Now here we can apply the approximation. How we can apply the approximation here? This is m omega square r square by 2 RT, and if we expand this, then P is equal to P naught 1 plus e raised to power x, 1 plus x square by 2 factorial and all. So I can write it till 1 term, and this small r is again very small. This is small r, we just need r up till at this point, because the beam radius is very small. So I am neglecting all other terms. So P is equal to P naught plus P naught m omega square by 2 RT into this r square. So I get pressure as a function of r. The other way can be, और इसमें यहाँ पर हम ये भी कर सकते थे कि यहीं पर हम जो एक्सप्रेशन बन रहा था dp इज इक्वल टू दिस, यहीं पे p को जस्ट हम p नॉट के बराबर ही लिख लें.
तो यहाँ पर एक दूसरा तरीका इसको सॉल्व करने का ये हो सकता है कि वी कैन राइट डी पी एज, एंड दिस पी इज अप्रोक्सीमेटली पी नॉट एवरीवेयर, दिस इज पी नॉट एम बाई आर टी ओमेगा स्क्वायर आर डी आर. So just integrate this expression from p naught to p and from 0 to r, and here it is p minus p naught, and it will be p naught m omega square r square by 2 rt, and you can clearly see that p is equal to p naught plus this expression, and here also we are getting the same expression. So pressure as a function of distance r. So till now we are successful to find pressure as a function of distance. P is equal to p naught m omega square by 2 rt into this r square. So P is a parabolic function of r square, quadratic function of r. But we have to find the refractive index as a function of this r, and refractive index is given in terms of this density. So let us find the refractive index as a function of r. So n is equal to 1 plus alpha rho. So from here we can find the refractive index. So n is equal to 1 plus alpha into rho, and this rho can be written as Pm by RT from here. So rho is equal to Pm by RT, and we know the pressure. So 1 plus alpha m by RT, and for pressure we can put this all expression P is equal to P naught plus P naught m by RT, it is 2 here, omega square r square. So what we are getting, this is 1 plus alpha m P naught divided by RT plus, and m by RT, it will be squared, so it is alpha P naught by 2, it is m, omega is also squared, so let us take it with this m omega by RT square multiplied by r square. So finally we are getting n as a function of r square. थोड़ा सिंप्लीफाई करने के हिसाब से we can also write it like this to simplify the expression. n is equal to, I am taking this term as some n naught, and let us take this term as k. So this is some n is equal to n naught k r square, where n naught is, what is n naught here? N naught is this quantity 1 plus alpha m p naught divided by RT, this is n naught, and what is k? Alpha p naught by 2 m omega by RT square. So this is our k. So finally this is important for us that n is increasing with r. So here n is increasing with r, and I have also taken a problem like this in which refractive index is varying with the radial distance. तो एक इस तरीके का प्रॉब्लम मैंने लिया हुआ है जहाँ पे refractive index जो है वो रेडियल डिस्टेंस के साथ वेरी कर रहा था, लेकिन जो प्रॉब्लम मैंने ऑलरेडी पहले लिया हुआ है उसमें यहाँ पर इन बिटवीन माइनस था, दैट मीन्स आर के साथ साथ रिफ्रैक्टिव इंडेक्स वाज डिक्रीजिंग, बट हियर आर के साथ साथ रिफ्रैक्टिव इंडेक्स वाज इंक्रीजिंग. तो जो हमने पहले एक एग्जांपल ले रखा है, जो क्वेश्चन ले रखा है, उसका मैं लिंक भी डिस्क्रिप्शन में रख दूंगा. तो उसमें एन नॉट माइनस था, दैट मीन्स रिफ्रैक्टिव इंडेक्स डिक्रीज़ कर रहा था, और उस तरीके का जो थिन डिस्क था वो कन्वर्जिंग लेंस की तरह बिहेव कर रहा था. इट वाज बिहेविंग लाइक ए कन्वर्जिंग लेंस. और यहाँ पर भी हमें देखना पड़ेगा कि किस तरह से बिहेव करता है. तो यहाँ पे हम ऐसा सोच सकते हैं कि एक डाइवर्जिंग लेंस की तरह माइट भी बिहेव कर रहा होगा, क्योंकि यहाँ पर एन जो है वो रेडियल डिस्टेंस के साथ साथ इंक्रीज़ कर रहा है, और कन्वर्जिंग लेंस जो ग्रीन लेंस जिसको बोलते हैं ग्रेडेड इंडेक्स रिफ्रैक्शन लेंस, उसमें एन जो था वो आर के साथ साथ डिक्रीज़ कर रहा था, यहाँ पर एन आर के साथ साथ इंक्रीज़ कर रहा है. तो फर्दर हम बस मैं इसी फॉर्मूले को लेते हुए आगे बढ़ूँगा यहाँ पर. तो अब तक जो भी इस क्वेश्चन में हमने किया है दैट इज़ सम काइंड ऑफ मैकेनिक्स और थर्मोडायनेमिक्स, जहाँ पर आइडियल गैसेस के कंसेप्ट और प्रेशर का कंसेप्ट यूज़ करके जस्ट हमने अभी यहाँ पर ये n कैलकुलेट किया है. वी हैव जस्ट कैलकुलेटेड द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स एज ए फंक्शन ऑफ r. इसके बाद हम इसमें ऑप्टिक्स और वे ऑप्टिक्स के कंसेप्ट का यूज़ करेंगे. तो यहाँ तक जस्ट हमने n एज ए फंक्शन ऑफ r अभी कैलकुलेट किया है. तो लेट अस मूव फर्दर and apply the concepts of wave optics or optics in this problem. तो इस
क्वेश्चन में अब तक हमने यहाँ पर ये n इज इक्वल टू n0 प्लस के आर स्क्वायर ये कैलकुलेट कर लिया है, और डिस्क को अब मैं यहाँ पे कुछ इस तरीके से रिप्रेजेंट कर रहा हूँ। ये इसके थिकनेस है और ये इसके एक्सेस है जिसके अबाउट ये ओमेगा से रोटेट कर रही है, और ड्यू टू दिस काइंड ऑफ रोटेशन जो n है वो रेडियली यहाँ पे वेरी कर रहा है कुछ इस तरीके से। और ये हमने प्रीवियस प्रॉब्लम्स जो डिस्कशन कर रखी हैं इस तरीके के वे ऑप्टिक्स पे पहले भी, उसमें मैंने ये डिस्कस किया हुआ है कि इस तरीके के प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने के लिए वी मस्ट यूज़ द कंसेप्ट ऑफ हाइगन्स प्रिंसिपल और वेव फ्रंट थ्योरी, वे ऑप्टिक्स, उनके कंसेप्ट्स का हमें यूज़ करना चाहिए, ना कि यहाँ पे सिंपली बस हमें ज्योमेट्रिकल ऑप्टिक्स का यूज़ करना चाहिए। अगर हम ज्योमेट्रिकल ऑप्टिक्स का यूज़ करेंगे तो वी माइट गेट द रॉन्ग रिजल्ट्स। हमें ये लगेगा कि दिस इज़ नॉर्मल इंसिडेंस एंड नॉर्मल इंसिडेंस द रे विल पास अनडेविएटेड, so we will get a parallel beam, but reality is different, we will not get parallel beam. So we must use the Huygens principle or wavefront theory to solve this kind of situation of a variable refractive index problems. So variable refractive index, अब यहाँ पे जो कंसेप्ट हमें यूज़ करना होता है इन क्वेश्चंस को सॉल्व करने के लिए, पहले बार यहाँ पर देख लेते हैं। लेट अस फर्स्ट सी कि हाउ द बीम इज़ मूविंग इनसाइड दिस मटेरियल, जिसमें ये रिफ्रैक्टिव इंडेक्स इस तरीके से वेरी कर रहा है। तो जस्ट इसको यहाँ पे पहले विजुलाइज कर लेते हैं कि हाउ द थिंग्स आर मूविंग इन दिस सिचुएशन। सपोज दिस इज दैट डिस्क एंड रेज आर कमिंग लाइक दिस, रेज आर कमिंग लाइक दिस। सो व्हाट इज द शेप ऑफ वेव फ्रंट? वेव फ्रंट विल बी लाइक दिस, दिस इज द वेव फ्रंट्स। Suppose this wave front is just, the particles on this wave front is just about to enter in this disk. So this point and this point, we are taking this 2-3 points. Since n is increasing as we moving away from the axis, so if n increases then speed decreases, so this point will move further, but this point will leave behind, this point will leave behind. So the shape of wavefront will be something like this. Now the wavefronts will move something like this. So and wave, if we plot ray will be perpendicular to this wavefronts and ray will take shape something like this. Ray are moving something like this. Since thickness of this disk is very less, it is a very thin disk, so we can just avoid the bending inside this disk to calculate फॉर कैलकुलेशन पर्पस। सो कैलकुलेशन पर्पस के लिए जो बैंडिंग यहाँ पर अंदर हो रही है उसको हम यहाँ पर नेगलेक्ट करेंगे, क्योंकि डिस्क यहाँ पे काफ़ी थिन है। और यहाँ पे हमें ये इसमें फील हो जाएगा कि रेज आर डाइवर्जिंग लाइक दिस, सो इट इज़ बिहेविंग लाइक अ डाइवर्जिंग लेंस। एंड इसको अगर मैं यहाँ पे पीछे की तरफ एक्सटेंड करता हूँ ऐसे, तो ये कहीं ना कहीं जाकर के यहाँ कहीं मिलेंगे। एंड this distance is some kind of focal length, just like diverging lens. तो diverging lens में जिस तरीके से होता है कुछ वैसे ही यहाँ पे हो रहा है, and this distance we can treat like focal length. So let us solve this question using this diagram. So in this diagram I am not using the bending inside this material. इस material में bending को यहाँ पे represent नहीं कर रहा हूँ. I am neglecting bending inside the material, but actually there is a bending here. अदरवाइज़ अगर बेंडिंग नहीं होती तो फिर इस तरीके से ये डाइवर्स नहीं होते। तो कैलकुलेशन पर्पस के लिए जस्ट मैं इसे स्ट्रेट अज्यूम कर रहा हूँ। इट इज़ जस्ट लाइक ए स्ट्रेट रे एंड आई एम कंसंट्रेटिंग ऑन दिस टू रे, दिस रे आई एम कंसंट्रेटिंग जस्ट ऑन दिस टू रेज। एंड व्हाट कंसेप्ट आई एम गोइंग टू यूज? द कंसेप्ट इज सेम, and the concept says all the points on a wave front will travel, all the points on a wave front will travel same optical path. Remember, it is optical path, not geometrical path. Will travel same optical path. So all the points on a wavefront will travel same optical path in a given time. So किसी भी पर्टिकुलर wavefront पे जितने भी पॉइंट्स हैं तो सेम टाइम में सभी पॉइंट्स सेम डिस्टेंस ट्रैवल करेंगे। हो सकता है कि कुछ अलग अलग तरीके से ट्रैवल कर रहे हों, जैसे यहाँ पे कुछ ऐसे ये जो wavefronts हैं इस पर ये जो डिफरेंट पॉइंट्स आपको नज़र आ रहे हैं वो सभी सेम टाइम में सेम डिस्टेंस ट्रैवल करेंगे।
कोई ज़रूरी नहीं कि वो एक स्ट्रेट लाइन में ट्रेवल कर रहे हो, वो इस तरीके से ऐसे भी जा सकते हैं। तो वो कैसे भी चलें, लेकिन उनका जो डिस्टेंस होगा, ऑप्टिकल पाथ होगा, वो सेम होगा। ऑप्टिकल पाथ शुड बी सेम इन ए गिवन टाइम इंटरवल। And how do we calculate the optical path? So if a ray travels distance equal to L in a medium of refractive index n, then multiplied n with L. So n multiplied with L will give the optical path length in a medium with refractive index n. So I am just concentrating on these two rays. One ray is this much, which is at a distance, let's say r. Let's say r is the radius of the beam, and this ray will deviate the maximum. Since this ray is not deviating, and this ray will deviate the maximum, the ray which is farther and farther away will deviate the maximum. So this ray inside the material is going like this, and after that there is a deviation. Suppose after leaving the material it is going something like this. डायग्राम की क्लैरिटी के लिए मैं इस रे को भी एक्सटेंड करके और इसका भी डेविएशन यहाँ पर रिप्रेजेंट कर रहा हूँ. तो सपोज इट इज़ मूविंग समथिंग लाइक दिस, एंड देयर इज़ अ डेविएशन इन दिस रे ऑल्सो, सो इट इज़ डेविएटिंग समथिंग लाइक दिस. अगर मैं इनको पीछे की तरफ एक्सटेंड करता हूँ, तो एक्सटेंड करने के बाद में वी कैन सी दिस रेज आर मीटिंग एट सम पॉइंट लाइक दिस, एंड इट इज़ जस्ट लाइक अ फोकल लेंथ. सो दिस डिस्टेंस इज जस्ट लाइक अ फोकल लेंथ हियर. एक वेव फ्रंट में यहाँ पे ड्रॉ करने वाला हूँ. आई एम जस्ट कंसंट्रेटिंग नाउ ऑन दिस टू रेज, और एक वेव फ्रंट, क्योंकि ये जो रेज हैं, दिस रेज आर जस्ट मूविंग लाइक दिस, एंड दिस रेज सीम्स टू बी कमिंग फ्रॉम दिस पॉइंट. तो अगर ये जो रेज हैं, वो रेज अगर इस पॉइंट से आती हुई दिख रही हैं, तो इसका मतलब है कि यहाँ पर जो वेव फ्रंट्स अब होंगे यहाँ पे, तो दिस वेव फ्रंट्स विल डेफिनेटली बी स्फेरिकल. तो ये जो वेव फ्रंट्स हैं वो स्फेरिकल है, तो हमें स्फेरिकल वेव फ्रंट्स यहाँ पे ड्रॉ करने होंगे. तो सपोज मैं एक ऐसा स्फेरिकल वेव फ्रंट यहाँ पे ड्रॉ कर रहा हूँ जो कि इस पॉइंट और इस पॉइंट से पास कर रहे हैं यहाँ पे. तो इट इज़ समथिंग लाइक दिस. सॉरी, let us zoom this diagram a bit, and now I am drawing the wavefront. Suppose this is that wavefront, and this wavefront is definitely a spherical wavefront. So on this wavefront I am taking 2 points. One point is this and one point is this, and for these 2 points I have to equate the optical paths. For the optical path of this point, so this point has traveled like this, and for the optical path for this, so refractive index for this ray will be equal to n naught. Refractive index, suppose for this ray is equal to n, so for optical path of this ray we have to multiply n with h, so n into h will be the optical path of this ray. And for optical path of this one, for optical path of this one, from this point to this point, the optical path is n naught into L, and this much distance, again zoom a bit, the this much distance, ये जो distance है, ये distance इसने एक तरीके से वैक्यूम में ट्रैवल किया, तो ये distance we have to calculate directly. इसको directly यहाँ पे calculate करना पड़ेगा यहाँ पे. तो this distance has to be calculated directly. अब ये डिस्टेंस कितना होगा, तो व्हाट इज़ दिस डिस्टेंस. तो ये डिस्टेंस कैलकुलेट करने के लिए यहाँ पर अब ये देखते हैं इसमें कि हाउ टू फाइंड दिस. तो ये जो डिस्टेंस है यहाँ से लेके यहाँ तक, दिस डिस्टेंस इज इक्वल टू दिस डिस्टेंस इज इक्वल टू आर. तो ये डिस्टेंस आर है, और ये जो डिस्टेंस है यहाँ पर इसमें, दिस इज़ द फोकल लेंथ. तो ये जो डिस्टेंस है, दिस डिस्टेंस इज इक्वल टू एफ. Now concentrate on this right angle triangle. In this right angle triangle, distance from here to here, this distance is equal to f. This distance is equal to r. So this distance is under root r square plus f square.
and this is just like center of this spherical surface. So this distance is equal to under root r square plus f square, and obviously the distance between this point and this point, so this total distance is equal to under root r square plus f square. So what is this distance? So this distance is going to be under root r square plus f square. This is the total distance from here to here, and from here to here it is equal to small f, so minus f. So we can see now that रिफ्रैक्टिव इंडेक्स इज इंक्रीजिंग. सो यहाँ से यहाँ तक का जो ऑप्टिकल पाथ है इन दोनों का, तो उसमें ऑप्टिकल पाथ इसका ज़्यादा होगा, इसका ऑप्टिकल पाथ कम होगा. तो यहाँ से यहाँ तक ट्रैवल करने में इसने ऑप्टिकल पाथ लेंथ ज़्यादा ट्रैवल किया है. अगर मैं मटेरियल के अंदर बात कर रहा हूँ, इनसाइड द मटेरियल, तो इनसाइड द मटेरियल इसने ज़्यादा ऑप्टिकल पाथ ट्रैवल किया, इसने कम ऑप्टिकल पाथ ट्रैवल किया है, और उसको कंपनसेट करने के लिए इसने बाद में इतना एक्स्ट्रा ट्रैवल किया है. तो इस तरीके से दोनों के जो ऑप्टिकल पाथ होंगे वो सेम हो जाएंगे. तो ऑप्टिकल पाथ मैं दोनों के सेम कर देता हूँ यहाँ पर. तो लेट अस इक्वेट द ऑप्टिकल पाथ फॉर बोथ. तो दोनों के ऑप्टिकल पाथ को सेम कर रहे हैं यहाँ पर इसमें. तो ऊपर वाले के लिए ऑप्टिकल पाथ हो जाएगा n मल्टीप्लाइड विथ h, नीचे वाले के लिए ऑप्टिकल पाथ हो जाएगा n नॉट मल्टीप्लाइड विथ h प्लस एक्स्ट्रा इज अंडर रूट r स्क्वायर प्लस f स्क्वायर माइनस f. ये वाला पार्ट है, इसको मैं अलग से यहाँ पे कैलकुलेट करने जा रहा हूँ. इसमें हमें बाइनोमियल का यूज़ करना पड़ेगा. ये जो f होगा वो एफ आर के कंपैरिजन में काफ़ी ज़्यादा होगा, क्योंकि ये यहाँ पर इस तरीके से इसमें जो बेंडिंग हुई है वो बेंडिंग बहुत ही कम है. ये जो एंगल वगैरह बना होगा, लेट्स से दिस एंगल इज़ 5, तो ये जो एंगल बना होगा एंगल बहुत ही कम होगा. तो अगर ये एंगल बहुत ही कम है, ये फाई बहुत ही कम है, यहाँ पर ये वाला एंगल भी यहाँ पर फाई हो गया. तो ये फाई अगर बहुत ही कम है तो उस केस में आर और एफ़ को अगर कंपेयर करेंगे तो एफ़ बहुत ज़्यादा होगा और आर बहुत कम होगा. तो यहाँ पर एफ़ मस्ट बी मच ग्रेटर देन आर. तो इसको मैं यहाँ पर अगर एफ़ कॉमन ले लूँ इसमें, तो ये हो जाएगा 1 प्लस आर स्क्वायर बाई एफ स्क्वायर एस टू पावर हाफ माइनस 1. दिस एफ इज़ नाउ कॉमन एंड अप्लाई बाइनोमियल and neglect the higher order terms. So r square by 2 f square minus 1, so it is r square by 2f. So this extra term is r square by 2f. So this is nh is equal to n naught into h plus r square by 2f. And what is this n? N is equal to n naught plus r square by 2fh. Compare this with what we have calculated earlier. We have calculated that n is equal to n naught plus k r square. So from comparison, this k will be equal to, this k is equal to 1 upon 2 fh. This k is equal to 1 by 2 fh. And what we have to calculate? We have to calculate the radius of this spot on this screen. So let us assume here we have a screen, let's say, which is at a distance L from here. This distance is equal to L. So this distance is L. So what is the radius of this spot? So we have to find this distance, and this distance is equal to radius of the beam, which is r here. So this is small r, and this we have to calculate. So this distance will be equal to, let us write this. So this distance will be equal to L into phi. And what is phi here? To find phi is a very small angle here. So phi is equal to, from this triangle we can write phi is equal to r by f. So phi is equal to r by f, and we have to find the value of L phi, and in L phi we have to add the value of r. So phi is equal to r by f, and what is f here? F is equal to 1 by 2 kh. So it is 2 kh into r. So phi, you can also see phi is directly proportional to r. So जितना यहाँ पर ये रेडियल डिस्टेंस होगा यहाँ पर, उतना ही ज़्यादा उसमें यहाँ पर ये phi होगा, यानी कि उतना ही उसका डेविएशन होगा. तो phi is directly proportional to r here. So it is phi is equal to khr.
So what is the radius of this spot? So radius of this spot is equal to the radius of the beam plus this L into phi, and for phi we can write this, and in phi we need the value of k, and k we have already calculated, we can put that value of k. So this will give us the radius of the spot. We can also solve this question using some different approach. तो इसके बाद मेथड नंबर 2 से इसको यहाँ पे देख रहे हैं. तो अगेन दिस इज अ डिस्क ऑफ थिकनेस h. मैंने यहाँ पे दो रेस कंसिडर करी है. एक रे सपोज r इज इक्वल टू आर पे है, दूसरी रे r इज इक्वल टू आर प्लस डी आर पर है, और दिस आर मूविंग लाइक दिस. तो हमेशा की तरह इसमें अंदर में जो डेविएशन उसको मैं नेगलेक्ट किया है, और ये बाहर निकलते समय इस तरह से डेविएट हो रही है. जो रे जितनी ज़्यादा दूर होगी वो उतनी ज़्यादा डेविएट होगी. तो इसका डेविएशन थोड़ा ज़्यादा, इसका डेविएशन थोड़ा कम. इनको जब बैकवर्ड एक्सटेंड किया तो वो यहाँ कहीं मिले, और एक तरीके से जो f है वो एक तरीके से यहाँ पर फोकल लेंथ की तरह बिहेव करेगा, एंड दिस सिस्टम इज़ लाइक अ डाइवर्जिंग लेंस. अब इसमें अगर आप ये देखो तो ऊपर की तरफ n बढ़ता जा रहा है. यहाँ पर इसमें अगर ऊपर n बढ़ता जा रहा है तो इसने कम ऑप्टिकल पाथ ट्रैवल किया है, इसने ज़्यादा ऑप्टिकल पाथ ट्रैवल किया है. तो इसने कम ऑप्टिकल पाथ ट्रैवल किया है, लेकिन बाहर निकलने के बाद में आप देखो यहाँ पर एक परपेंडिकुलर आप यहाँ पर इस पर ड्रॉ कर सकते हो. यू कैन ड्रॉ अ परपेंडिकुलर हियर. सपोज इस तरीके से अगर एक परपेंडिकुलर यहाँ पे ड्रॉप किया जाए फ्रॉम दिस पॉइंट, तो दिखाई देगा यहाँ पर कि इसने थोड़ा एक्स्ट्रा पाथ ट्रैवल किया है बाद में. तो जो नीचे वाली रे है उसने बाद में थोड़ा एक्स्ट्रा पाथ यहाँ पर ट्रैवल किया है. उसके बाद ऑलमोस्ट दोनों पैरेलल मूव कर रहे हैं. तो इस रेड वाली रे ने पहले ज़्यादा ऑप्टिकल पाथ ट्रैवल किया, बाद में कम किया. इस ग्रीन वाले ने पहले कम ऑप्टिकल पाथ ट्रैवल किया, बाद में उसको कंपनसेट किया यहाँ पे ज़्यादा ट्रैवल करके. तो दोनों के ऑप्टिकल पाथ यहाँ पर सेम होंगे, या फिर ऐसे कह लीजिए कि यहाँ पे जो डिफरेंस आ रहा है वो डिफरेंस और ये डिफरेंस बराबर होगा यहाँ पे, क्योंकि पहले ये ज़्यादा चला, उसके बाद फिर उसको कंपनसेट किया इसने यहाँ पर ज़्यादा चल के. तो यहाँ का ऑप्टिकल पाथ का डिफरेंस और यहाँ का ऑप्टिकल पाथ का डिफरेंस बाहर, उन दोनों को बराबर कर दिया जाए. तो अब यहाँ पर इसमें ये जो ग्रीन है, तो ग्रीन पे सपोज रिफ्रैक्टिव इंडेक्स जो है वो n के बराबर है. तो इसका जो ऑप्टिकल पाथ है वो कितना हो जाएगा, NH. और यहाँ पे ये n प्लस डी एन है, तो n प्लस डी एन इंटू एच. तो अंदर में कितना डिफरेंस आ गया यहाँ पे, डी एन इंटू एच. तो दिस मच इज़ द डिफरेंस इन द ऑप्टिकल पाथ. अब उस ऑप्टिकल पाथ को कंपनसेट करेगा यहाँ पर ये एक्स्ट्रा मूव करके. तो ये जो डिस्टेंस है ये डिस्टेंस हो जाएगा डी आर. और सपोज़ यहाँ पर ये फाई एंगल बन रहा है यहाँ पर इसमें. तो इफ़ दिस एंगल इज़ फाई, तो ये वाला एंगल अगर फाई हो जाएगा तो उस केस में ये वाला एंगल हो जाएगा 90 माइनस फाई, और ये वाला एंगल हो जाएगा यहाँ पे फाई. तो अगर ये वाला एंगल यहाँ पर फाई है तो ये वी कैन फाइंड दिस इज़ डी आर साइन फाई. ठीक है, दिस ये जो ऊपर वाला एंगल है दिस एंगल विल बी फाई, तो दिस विल बी डी आर साइन फाई. तो दिस इज़ डी आर साइन फाई, and this phi is again a very small angle here. So phi will be a very small angle, तो sin phi को phi यहाँ पे लिख सकते हैं. तो dn into h, this is dr into phi, and now dn into h. So dn by dr is equal to phi by h. So dn by dr is phi by h, and we know that n is equal to n naught plus kr square. So from here dn by dr, this is equal to 2kr. So we can put this equal to 2kr. So this phi will come out as 2khr. So this is the value of phi, and from this phi we can again calculate the radius of this spot at a distance L. So what is the radius of this spot? It is radius of the beam plus L into phi. So radius of the beam plus L into phi, and this phi is 2khr. So we can see that we have also obtained this kind of answer in the previous method also. So we can just compare. In the previous method this phi is 2khr, and again this phi we have obtained 2khr. So we can use both the methods as we like. So this is the final answer. We can put the value of k as we have calculated earlier.